Rahim. Assalamu alaikum to everyone, and welcome to a very interesting and exciting lecture today, which is related to design of the foundations. And this is a continuation of the previous lecture, which was based upon solving and applying the knowledge and the theory which we learned from Terzali's bearing capacity equation and also the Merhoff bearing capacity equation. So in today's lecture, which is lecture number 5, will be related to design problems and examples on those two theories. So starting with our today's lecture, we are given with a design problem which says that we are given with a rectangular footing having width b and length l. Now, okay, please confirm that you can hear me and the screen is visible. Yes, sir. Clear. Okay, thank you. Now that load of 2500 kilonewton is applied vertically and moment is applied in the direction of the width of the foundation, and that is equal to 600 kilonewton meter. The width of the column is 0.4 meter and the depth of this foundation is equal to 1.5 meter. The horizontal load which is applied onto this column here is equal to 600 kilonewton, and the cohesion is 40 kilopascal, and the unit weight of the soil is 17.5 kilonewton per cubic meter. The friction angle value is 25 degrees and the factor of safety is equal to 5. Please kindly take a screenshot or take a picture of this slide because we are going to use this here. Now, starting with the solution, from where we need to start. Any idea from where to start? Merhoff equation use करेंगे. Merhoff की जो equation है वो use करेंगे. So we need to start with an assumption because we don't know assumption for the footings dimension. For example, B into L, and that is equal to 2.5 into 3 meter because we don't have any dimensions here. So the first thing we need to do, we need to assume the dimensions of the foundations, and then we need to assume that B, which is the width of the foundation, should be in the direction of moment and the horizontal load. Okay, that should be our first assumption. Now then we will find out eccentricities. Now how we are going to find out the eccentricities
please kindly give me the value of EB and EL, which means the eccentricity in the direction of the width of the footing and eccentricity in the direction of the length of the footing. I would like to request all the students to please kindly participate during the calculation, and that participation would be counted towards your sessional marks, and those students will be given preference during the rechecking of their quizzes and assignments. EP 0.24. Okay, EB should be equal to 0. Okay, just wait a moment. 0.24. Name, please. Amna. Okay, and how about the EL? So EL will become equal to 0 because the ML is equal to 0. Now that was about the eccentricities. Now we can easily find out the effective dimensions. Please kindly give me the value of B prime and L prime. 2.02. 2.02. Okay, let me increase my 2.02. Name, please. Janita. Okay. How about the L prime? 3 meter. 3 meter. Okay, 3 meter. And names, please. Amna. Okay. And Ibrar, I guess. Waqar, sir. Waqar. Okay. Okay, so these would be our effective dimensions. And as Usman said, that we need to have a check here as well. As you can see that B prime is less than L prime, so it's okay. So you don't need to swap the values here because B prime value is less than the L prime value. Now we need to use the Marov bearing capacity equation to find out the Q ultimate. But we need to find out few factors here.
For example, we need to find out the bearing capacity factors, we need to find out the shape factors, we need to find out the depth factors, we need to find out the inclination factors, and after that, using those, the value of the B prime, we will use the effective dimension, and then we will come up with the Q ultimate, and we need to compare that whether it's going to give us the factor of safety 5 or not. So first thing first, let's start with the bearing capacity factors here. Okay, so we are going to find out the bearing capacity factors, okay, for phi equal to 25 degrees. So NC, NQ, and N gamma. One, two, and three. NQ is 20.7. Okay, just wait a moment, please. Okay, what's the value, please? 20.7. 20.7. Name, please. Mashal Shahjahan. Can you please say again? Mashal Shahjahan. Okay, Mashal. Okay, now NQ and N gamma. 10.662. 10.662. Okay, 10.662. And N gamma? 6.7654. 6.76. 76. Name, please. Janita. Okay. Now, I guess these are reasonable numbers. So please kindly note down these bearing capacity factors. Now we will move towards the other factors here as well. Fact. Okay, please kindly note down because I am erasing these values. We need to use in the bearing capacity equation. Now we will find out the shape factors. And for finding the shape factors, we need to find out the Kp first. And for the finding the Kp, we need to use this equation. Okay, please kindly give me this value. 1.85. 1.85. I need another value here as well. 2.46. 2.46. 2.46. Name, please. Amna. The other person who said first 2.46 was that person. Usman, sir. Usman. Okay. 1.96. Okay, 1.96. Name, please. Ibrar. Ibrar. Okay, I would say this value seems to me more reasonable one. So please kindly note down that value 2.46 as a shape factor. I'm going to erase this.
Okay, now we need to find out the depth factors. And for finding the depth factors, now we find out the Kp, but we didn't calculate the SC, SQ, and S gamma. So first we need to calculate the shape factors. 1.331 SC. 0.331 and SQ 1.35. S gamma वो भी यही है 1.35. 1.35. Okay, so please kindly note down these numbers because I'm going to erase. These are the correct numbers. Now we will move towards finding the depth factors. DC, DQ, and D gamma. And we already know the equation here, 0.2 Kp B prime divided by L prime. That's for the shape factors, sorry. Okay, give me these numbers for the depth factors, please. 1.23. Okay, that would be 1.23. And how about the 1.1. DQ? 1.11, and this value would be also same here, 1.11. Please kindly note down these values. And then at the end, we are going to find out the give me the theta value first, and then IC, IQ, and I gamma. 13.49. 13.4. Okay. Any other value? 0 नहीं होगी. 13.5. 13.5. Why 0, Usman? 13.5. सर हॉरिजॉन्टल कंपाउंड 0 यहाँ पर है 0 है. क्या 0? क्यों 0? किसने कहा कि 0? ये तो यहाँ पे देखे ना आप, सेंट्रल कंपोनेंट हमारे पास ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है, ये वर्टिकल लोड लग रहा है, इसको पीवी बोल दे, तो हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल आप कर लें इसको. ओके सर, वो नहीं देगा सर ये. ठीक है, कोई मसला नहीं. खैर 13.5 degree, I would say, this is the most closest one,
So you can use that theta value for finding the IC, IQ, and I gamma inclination factors. So please kindly calculate and give me those values. Sir, I gamma, sir, I gamma 0.2116. 0.2116. Okay, it's I see reasonable. 0.72. 0.72. Okay, that's good. Both reasonable, and I would say that's also reasonable. So please kindly note down these values, because now we are going to find out the ultimate bearing capacity using the Meyerhof bearing capacity equation. Okay, now what we can do, we need to find out, we need to use the Meyerhof equation. You can use the first term, then the second term, and then the third term. Okay, the first term, so we need to reduce the width here. Now we find out the shape factors, we find out the depth factors, and we find out the inclination factors. Now please kindly give me the value for the ultimate bearing capacity of this soil. Take your time, no worries. Approximately 2 minutes. $12.80.
सर आपका माइक ऑफ है। Thank you. Good catch. Okay, name please. Zara. And 1278, here sir. 1316. 1278 kPa. Name please. Waqar, sir. Wakar. Okay. 1316. And 79. 1316. I guess it's Ibrar or 13 क्या 79 1323. 1320. So I guess Amna and what was the other? Usman. What was your value? 1279. 1279 kPa. Name please. Fahad. Fahad. Okay. Actually, I have the closest value, these ones. So I would say use this value of the Q ultimate. Please kindly note down that value here. Now we have the effective area, and the effective area is equal to 6.60 square meter. And now if we want to find out the applied stress, so we can find out using the vertical load divided by the effective area. Give me this value, please. 412.5 kPa. Okay, that would be 412.5 kilopascal. And now if we want to find out the factor of safety, so we have the value of Q ultimate and we have the value of the Q applied. That was 1280. Here we are given with the value of 412. Please give me the value of the factor of safety. 3.1. 2.1. Okay, so that would be 3.1, which is less than the 5 which was required. It's not a good news, so we need to rethink. We need to again think about how we can increase the factor of safety of this footing. So what's the possible solution? How we can increase the bearing capacity and how we can increase the factor of safety for this foundation? By Sir, choosing वो other assume dimensions. Area Okay, increase. now choosing larger dimensions. Okay, Ebrar. Okay, increase the dimensions, I would say same. Okay, so we can do that. We can assume B into L, and then we will find out the Q ultimate, and we will do some calculations here, and then we will come up with the factor of safety. So this will be our trial number 2, I would say. This was the first one. Then for trial number 3, we may or may not get the desired factor of safety, which is 5 in our case in this design problem. Then we will again assume B into L, and we will find out the Q ultimate, and then we will do the calculation to find out the factor of safety. And then if it comes up close to 5, then we would say, you know, these are our desired dimensions. So there is a better way to solve it, and that is, now we are going to use the Q ultimate. So what was the Q ultimate
value 1280 kilopascal. And now what is the Q safe value, which is the Q ultimate divided by factor of safety? Please kindly give me this number. 255.9 kPa. Okay, that's good. Now for the effective area, we can find out the desired area to give us the safe bearing capacity of 255.9 kilopascal using the factor of safety of 5. So this should be the area of the foundation. Okay, this is a very important point. Please kindly listen very carefully. So this is the area which will give us the Q safe 255.9 for the factor of safety 5 and for the ultimate bearing capacity 1280 kilopascal. So this is the, I would say, new area, okay, effective area. But if you remember, this Q ultimate was calculated from the B prime, which was previous, from the previous trial. So why we do that? We do that because we want to increase this new foundation sizes with a certain ratio, and it has an advantage. The advantage is that, you know, it reduces the calculations, because now we are only changing the B prime there, so the first and second term won't change significantly, and if the B prime is not significantly greater, in that case what will happen that even the third term won't change significantly. But if you compare that as a ratio, okay, the previous one, so we will get a ratio of 0.673. Agreed? Now we will solve. Let's take this one. So we will solve for B prime and L prime. So how we are going to do that? We will solve very simply. We already know that the ratio is equal to 0.673, and we can call that as equation number 1, and we can also say that the B prime into L prime, that's and that is L prime. So we B prime into L prime, which is the area, okay, and that's equal to 9.769 square meter. Now from this equation we know that the B prime is equal to 0.673 into L prime. Now you can put this in the equation number 2, and please kindly give me the value of L prime and B prime. So you can clearly see that how we are going to increase the footing dimensions. We are not just assuming, so we can assume in the first trial, but in the second trial we are going a little bit, you know, strategically and logically, that we are going to increase with a certain ratio those B prime and L prime, and consequently we can increase the B and the length of the foundation. So please kindly give me the value of L prime and B prime. L prime 3.8. L prime would be 3.8.
B prime prime 2.5. 0.56. 2.56. Please kindly note down these values. Now, B prime was equal to 2.56 and L prime is equal to 3.8 meter. Now, please kindly give me the B and L, or the width of the footing and the length of the footing. Three meter. How much? 3 meter. 3 meter. 3.8. 3.8. Sir, length. Okay, that's length. So now we will get the B equal to, or the width of the footing equal to 3 meter and length of the footing equal to 3.8 meter. So the problem is solved here, but still there is a problem. Now you can use these dimensions, and please kindly give me the factor of safety. Okay, use these dimensions and find factor of safety value. EB is equal to 0.24 meter. Use these dimensions. EL is equal to 0. Give me the factor of safety. क्वेश्चन की समझ आई है कि नहीं आई है? No, sir, ये previous और new वहाँ पर काफी confusion थी. क्या कंफ्यूजन क्या थी यार? देखिए ना, यहाँ पे तो सिंपली हमने Q अल्टीमेट लिया, ये Q अल्टीमेट हमने लिया, ठीक है? ये Q अल्टीमेट हमने जब लिया है तो ये किस B प्राइम से हमारे पास रीडिंग्स आई थी? ये वाली क्वेश्चन किसका है? वो मेरे साथ रहे प्लीज. सर वो जो assume की थी 2.5. नहीं, क्वेश्चन किसका है? वो मेरे साथ रहे, वो नाम बताएं प्लीज. नसीर. नसीर है. अच्छा नसीर, देखें 1280 जो थी हमारे पास Q अल्टीमेट आया है, वो कहां से आया है? वो हमारे पास इस B प्राइम से आया है, जो कि हमारे पास प्रीवियस असम्पशन थी कि हमने 2.5 मीटर की जो फुटिंग है वो, और उसकी जो इफेक्टिव डायमेंशंस हैं वो 2.02 मीटर आ रही थी, ठीक है? फिर हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो थी वो कम आ गई थी. यहाँ पे इस पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास उसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी, अच्छा मैंने मिटा दिया, थिंक सो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 3.1 जो आ गई थी, सही है?
अभी हमने करना क्या है, हमें पता है कि हमें एरिया को इंक्रीज करना है, लेकिन एरिया को हम जो है ना इससे नहीं इंक्रीज कर सकते, किसी एक मेथड के साथ जो है ना अगर हम उसको इंक्रीज करें, किसी एक रेशियो के साथ अगर इंक्रीज करें तो वो थोड़ा सा लॉजिकल होगा। तो क्यों सेफ हमने फाइंड किया, सबर एक्सक्यूज मी, ये क्यों अल्टीमेट को यूज करके हमने क्यों सेफ फाइंड किया, ठीक है, और वो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फिर हमने इससे ए प्राइम जो कि हमारे पास न्यू इफेक्टिव एरिया है उसकी डायमेंशंस, उसकी हमें एरिया हमें मिल गया, ठीक है, हमें ये एरिया तो मिल गया लेकिन हमारे पास बी और एल मौजूद नहीं है। लेकिन एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ये एरिया हमने निकाला है यूजिंग द प्रीवियस एजम्पशन। तो अब हम अगर एक न्यू रेशियो लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस बी प्राइम डिवाइड बाय एल प्राइम के रेशियो के साथ, और अभी अगर हम इंक्रीज करते हैं बी प्राइम और एल प्राइम को विद द रेशियो ऑफ 0.673, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल गेट द वैल्यू क्लोज टू 5। अच्छा, ये हमने बी प्राइम और एल प्राइम को इंक्रीज किया है, ठीक है, और हमारे पास बी प्राइम और एल प्राइम की वैल्यूज आ गई हैं, और बी जो कि विड्थ ऑफ द फुटिंग है और लेंथ ऑफ द फुटिंग भी आ गया है। लेकिन मैंने अभी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करके दें कि अल्टीमेट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, कि अल्टीमेट हमारे पास कितना आ रहा है, उसमें आप ये नई डायमेंशंस और वही शेप फैक्टर्स वगैरह पुट करें, उसके साथ ज्यादा जो चेंज आएगा वो मेरे ख्याल में डेप्थ फैक्टर्स और थर्ड टर्म में आएगा। बाकी आपके जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं और शेप फैक्टर्स हैं उसमें इतना चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो रेशियो है वो सेम रखी है। ओके, इंक्लिनेशन फैक्टर्स आपके वही रहेंगे, आपकी जो चेंजेस आएंगी वो डेप्थ फैक्टर्स में और थर्ड टर्म में आएगी। तो उसको आप कैलकुलेट करें और आप मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो काइंडली दे दें। समझ आई है नसीर? यस सर, समझ आया। गुड। मशाल समझ आई है? जनीता समझ आई है? इब्रार समझ आई है? Yes, sir. उस्मान, Yes, sir. वकार, जी सर। आमना, जी सर। I need the factor of safety value with the revised dimensions. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझाना जरूरी है, और वो आप तब समझेंगे कि जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे। स्लाइड्स में तो मौजूद है, लेकिन जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आएगी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। Keep those bearing capacity factors, keep those shape factors, keep the inclination factors same, recalculate depth factors and the third term of the bearing capacity equation, and then give me the Q ultimate, and then find out the Q safe, and then you need to find out the factor of safety. So you need to give me the factor of safety and compare it with the required factor of safety, which is 5.
सर 4.95 आ रही है मेरे सर. 4.95. Now, why it's not coming exactly 5? We took here factor of safety 5. Is it? तो उसके Divide करना पड़ेगा, क्या जी? ये ब्रेड है, ये ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा, फिर 5 है। Name please. फहद, Okay, फहद, आपने भी पार्टिसिपेट किया था. गुड. करके एक नाम उससे भूल गया. बात सही है. असल में हमने previous, so we used the previous width of the foundation, so that's why the ultimate bearing capacity 1280 was used. Now, although the factor of safety of 5 was used, but due to this assumption, the previous B prime, we are closely getting, we are getting the value of factor of safety close to 5. So I would say factor of safety would be close to 5, not exactly 5, okay? But if you are interested to find out exactly 5, then you can refine your calculations, or you can redo your calculation to reach to the factor of safety equal to 5, and the dimensions would be 3.08 meter, and the length of the footing would be 3.87 meter. But if it is asked that you need to find out the length and the width of the foundation, so if you do this and if you follow the procedure which is taught previously in few minutes in the last hour, so that should be fine. Now there is an interesting thing which we need to do. Now we made an assumption, so we wanted to find, that is, I would say 5a, okay? Example problem 5a, I would call that. Now there is a slight change in here, and for that slight change, what we need to do here, we need to change this assumption. So in the 5a, we assumed that in this direction we are given with the width of the footing. However, in 5b, this would be the length of the footing now, which is equal to L, and we will call that as 5b. All the loading conditions, moment, and the soil condition of 2.5 into 3 meter. Now, please solve this problem, or I would say here, I will come here. समझ आइए कि नहीं आइए? समझ ये है कि यहाँ पे पहले हमने अज्यूम किया कि ये विड्थ ऑफ द फाउंडेशन बी इस डायरेक्शन में होगा. अभी हम कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द फाउंडेशन जो है ना वो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो जो लेंथ है वो एल इस डायरेक्शन में होगा. तो हमारे पास कुछ चेंजेस आएंगी, और वो चेंजेस क्या हैं? ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास ई बी हमारे पास बराबर था एम बी डिवाइड बाई वी 0.24 मीटर के, और ई एल ये प्रीवियस केस में था. अब इस केस में जब हमारे पास ये एल हो, ये हमारे पास एल है, तो ई बी क्या होगा?
और EL क्या होगा? EB 0. ई भी 0 होगा सर। एक्सीलेंट, ठीक है, EB हमारे पास 0 हो जाएगा और EL हमारे पास 0.24 मीटर हो जाएगा, जो हमारे पास प्रीवियस केस में था। अच्छा, अभी आप मुझे B प्राइम दे दें। B प्राइम क्या हो जाएगा? डिजाइन प्रॉब्लम, आई वुड से दिस इज 5B, ओके। हमारे पास B प्राइम क्या हो जाएगा और L प्राइम? B प्राइम 2.5 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास L प्राइम क्या हो जाएगा? 2.52। ये हमारे पास 2.52 मीटर आ जाएगा। चेक हमारे पास ये है कि B प्राइम शुड बी लेस देन L प्राइम, अदरवाइज यू वुड switch those values or you will swap those values, so that's okay. बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स पे कोई फर्क आएगा? चेक करें इसको। बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स पे तो मेरे ख्याल में फर्क कोई नहीं आएगा, so that's okay. Please kindly note down these bearing capacity factors, the effective dimensions. Now let's solve for the shape factors. How about the shape factors? So here you can note down the KP value, and please kindly give me the shape factors. SC, SQ, S gamma मुझे दे दें। Use this KP value to calculate the shape factors. ये हमारे पास शेप के हो जाएंगे, ये हमारे पास डेप्थ के हो जाएंगे, यहाँ पे इंक्लिनेशन आ जाएगी। सर यस प्लीज। सर ये एंगल तो चेंज नहीं हुआ सर, तो फिर KP की वैल्यू क्यों चेंज हो गई? क्योंकि वो तो हमारे पास 5 और 25 एंगल है, इस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हमारे पास 2.4639, तो यहाँ पर 1.966 है। नहीं, 1.9966 ही है, यहाँ पे भी 1.996 है, 96 है। आपने कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर मेरे पास और यहाँ पे भी 1.966 आ रही है और यहाँ पे भी 1.966 ही आ रही है। आई डोंट नो कि आपके पास 1.73 क्यों आ रही है, और अगर आपके पास 1.73 आ रही है तो फिर आपके पास SC, SQ, S गामा कैसे जो है ना वो करेक्ट आ सकते थे। समझ आइए उस्मान? मेरे सर पास तो अगर 1.9 एंगल तो हम 25 यूज करें, एंगल 25 है क्या है सर? इससे तो फिर 2.4 आती है सर। 2.4 है। यस सर 1.39। 2.46। अच्छा, तो एंगल यहाँ पे सेम ही है, कैलकुलेशन यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये आप कह रहे हैं कि ये 22.4 आ रही है, 2.4639। 2.46। 2.4639, ठीक है। चलिए ये इसको अपडेट कर लेते हैं, 2.4639। तो प्रीवियस केस में भी वही होगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रीवियस केस में भी यही होगी, और इस केस में 2.4629 आ रही है, तो ये मैं सर को बोल दूंगा कि इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सेम रहेगी, आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज है तो वो कैलकुलेशन एरर है। अच्छा, नाउ डेप्थ फैक्टर्स को कैलकुलेट करें। केपी को 2.4639 भी ले लें और 1.966 भी ले लें, तो आपके पास फिर जब ये 2.46 थी तो फिर ये वैल्यूज बाकी सेम कैसे आ रही थी? बाकी तो आपकी सारी सेम वैल्यूज आ रही थी। सर मेरे पास डिफरेंट आ रही थी। हाँ ना, तो बाकी तो हमारे पास यहाँ पे सारी सेम आ रही है, क्योंकि आपके पास जो सारी रीडिंग्स हैं ये हमारे पास जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक आ रही थी। आपके पास ये वैल्यू, ये वैल्यू
बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आ रही है, ये भी इसी तरह आ रही है, ये भी इसी तरह आ रही है, ठीक है। आपके पास 1280 भी आ रहा था, तो 1280 फिर कैसे आ रहा था आपके पास? हाँ जी, और 3.1 भी आपके पास आ रहा था, जब आपके पास 1.966 इतना ह्यूज एरर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। Anyways, सर चेंज आई थी वैल्यू हमारी क्यू अल्टीमेट की। अच्छा, आपके पास कुछ 13 समथिंग आई थी, आई गेस, राइट? जी सर, यस। Okay. Anyways, these minor calculation errors are accepted, so no worries, ठीक है। तो ये आप इसको कैलकुलेट करें, ये सिंपल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन से जो भी आपके पास आती है उसको आप वो वैल्यू आएंगे, कॉन्फिडेंटली उसको पुट करें, ठीक है। ये तो स्लाइड्स हैं, और जो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स या क्विजेस असाइनमेंट्स होते हैं तो उसको हम कोशिश करते हैं कि 2-3 दफा सॉल्व करें, या स्टैंडर्ड बुक से उठाया जाए, जिसमें जो है ना हमारे पास उसको डबल चेक किया जा सके, और एग्जाम में भी जो आपकी प्रॉब्लम आती है तो हम अपडेट कर लेंगे, वैसे भी रिकॉर्डिंग में आ गया है, ठीक है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट वो पॉइंट वो हमारा यहाँ पे रह गया है, ठीक है। हमारे पास इसको भी अपडेट कर दें, 2.46 जो है ना आप कह रहे हैं, तो बी प्राइम आ जाएगा, ये वैल्यूज हमारे पास जाएगी। डेप्थ फैक्टर्स को कैलकुलेट करें, आपके पास क्या आ रही है, सेम आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है आपको? Can you hear me? Then is the screen visible? Please confirm. Okay, thank you. नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। आपने क्यू अल्टीमेट की वैल्यू दे दी है, जरूरी नहीं है कि वो ये क्यू अल्टीमेट की वैल्यू 1377 के साथ जो है ना वो बिल्कुल करीब आए। आप लोगों ने सही तरीके से कैलकुलेशन करनी है और वो वैल्यू देनी है, ठीक है। कि जो क्यू अल्टीमेट की 1-2, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है। मेन चीज ये कि आपको थोड़ा सा मेथड सिखाया जाए, थोड़ा बहुत अगर एरर है तो वो उसको एड्रेस किया जा सकता है, अगर आप 2-3-4 बंदे जो है ना उसको कैलकुलेट करें तो उससे पता लग जाता है। क्यों अल्टीमेट हमें चाहिए, 4 रीडिंग्स अगर हमें मिल जाती हैं, उसमें अगर 2 रीडिंग्स मैच होती हैं तो उस रीडिंग्स को हम कहते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली सही हो सकती हैं। सर जो कैलकुलेशन है डेप्थ वेक्टर्स के लिए डी सी डी के और डी गेमा, उसमें सर हाँ, इन्होंने 2.46 ही यूज किया है, मतलब आंसर सेम आ रहा है इससे। अच्छा, सर बाकी सारी क्वेश्चन सही है, यस सिर्फ सर यहाँ पे सेम आ लाइट रहा है का सर। mistake है। अच्छा, बाकी डेप्थ चलें सही है, ठीक है, चलें मैं सर को बता दूंगा। सर ये सिर्फ सिर्फ केपी की वीडियो कर लीजिए सर, बाकी सिर्फ ठीक है। वैल्यू ये जो है ना ये चेंज कर लें, ठीक है। ओके, नोटेड प्लीज। क्यू अल्टीमेट भी हमारे पास सेम आ रहा है, कितना आ रहा है? यस सर, बाकी सारी हमारी। अच्छा, बाकी सारी सेम आ रही हैं, तो आई वुड अज्यूम कि 1377 किलो पास्कल सबके पास जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1370, 1375 या 1380 या 1385 किलो पास्कल आ रही है। एग्री? अच्छा, फिर हमारे पास नो सर, वो इफेक्टिव पूरी वो किया कैलकुलेट कि नहीं किया? सर सारी की वो सही आ रही, ये अभी तक नहीं की। ठीक है, चलें क्यू अल्टीमेट मुझे देने। ओके, टेक योर टाइम प्लीज, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स, सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। थैंक यू। वन 1305 क्यू अल्टीमेट।
13 05.2. बाकी भी कैलकुलेट करें। I need at least 3 readings, please. $13.20. Okay, 1320. $12.95. 1295. Okay. फिर उसी तरह, now we will do in a similar way as we did in our previous design problem. We will find out the A prime okay, give me the value of A prime, and then we will find out the Q applied, and that we can find out using this equation. Give me the value of this one as well, and we will come up with the factor of safety, which would be Q ultimate divided by Q applied, and we will obtain the factor of safety, and that is less than 5. But you can clearly see a slight increase can be seen here when we assume L in the direction of movement and horizontal load. Okay, a slight increase can be seen here in the factor of safety. Now, as we did in our previous design problem, now we will assume the Q ultimate, and for the time being I would pick the value of 1377 kilopascal, and then we will find out the Q safe, which is the safe bearing capacity, and using the factor of safety 5, we will find out this as 275.5 kilopascal. Then we will find out the effective dimension, and I would call that as new effective dimensions. Can you hear me? Please confirm. Yes, sir. Okay, thank you. So the vertical load divided by the safe bearing capacity, and that would be equal to 9.7073 square meter. Now in our previous example, this area was equal to 9.769 square meters, somewhat like this.
So a larger area was required when we assume B in the direction of movement and horizontal load. But now, if we assume that the length of the footing is in this direction, in the direction where moments are, horizontal loads are applied, so a lesser area would be required, which is economical. Okay, this is the economical option. We will do same ratio increase method. I would say this is the new one, and B prime divided by L prime. This is the previous one. Okay, and that is equal to somewhat 2.5 divided by 2.5. This one 0.99 approximately. Now we will solve for the B prime. If we solve for B prime, what should be the value of B prime and L prime, and also the B and L? I need these dimensions values. Okay, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? वही प्रॉब्लम है ना प्रीवियस वाला, उसी तरीके से रेशियो इंक्रीज के साथ जा रहे हैं, उस जिस तरह प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया है, बस क्यू अल्टीमेट तक आपने डिफरेंट फैक्टर्स लिए हैं, उनको कैलकुलेट किया है, बाकी तो सेम इफेक्ट एरिया फाइंड किया, क्यू अप्लाइड फाइंड किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आ गई। कहते हैं कि एक मेथड है हमारे पास और उस मेथड से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, जो बी प्राइम और एल प्राइम। डेफिनेटली हमने इस एरिया को इंक्रीज करना है। अब उस एरिया को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, तो एक रेशियो के साथ इंक्रीज करना है। उस रेशियो के साथ जब इंक्रीज करना है तो हमारे पास बी प्राइम एल प्राइम आ जाएगी और फिर बी और एल आ जाएगी, और यही हमसे रिक्वायर्ड था कि साइज ऑफ जो फुटिंग है वो हमें प्रोवाइड करें। सर बी प्राइम 2.99 और एल प्राइम 3.02। अच्छा 2.99 और एल प्राइम 3.02। बी कितना आ जाएगा और एल कितना आ जाएगा? बी सर सेम रहेगा और एल 3.5। हमारे पास साइज ऑफ फुटिंग ये होंगे, ठीक है। तो ये these are the desired values which were asked in this problem, that we need to find out the dimensions, for example width of the footing and the length of the footing. The problem is solved here, but as I mentioned earlier on, that if you want to refine our factor of safety to these two values or these dimensions, would give us the factor of safety which would be close to 5, which is okay. But if we want to calculate exactly 5, then we need to recalculate these dimensions
and the more appropriate dimensions to get exactly factor of safety 5 would be B equal to 3.03 meter, but as you can see here, the difference is not that much, so therefore we don't really worry about the exact 100% factor of safety which is close to the 5. So you gave me 3 and you gave me 3.5, and that will give us approximately factor of safety equal to 5. I hope you understand this concept clearly, because it's very important from exam point of view, from quiz assignments point of view, and for the understanding point of view as well. And as I mentioned earlier on, you can clearly see the difference in the area when you assume the width of the foundation in the direction of the movements and the horizontal loads, and also the effect of the reduction in the area when we assume the length of the footing in the direction of the load here as well. Anyways, so we will solve another problem here. For example, we are given with a strip footing and that is constructed on the non-plastic silty sand deposit, and the shear strength parameters are given, groundwater table information is given. So let's see if I can draw it neatly. Okay. Now the groundwater table is located at 1.2 meter. So somewhere here is the water table. .2 meter, and the information is given. Proposed strip footing will be 1.2 meter wide, so it's 1.2 meter wide, and this embedment or the depth of the footing 0.6 meter below the ground surface, and the factor of safety should be 3 against the shear failure, and C prime is 0, phi prime is equal to 30 degrees. What else we need to know? Okay, the saturated unit weight. Okay, the saturated unit weight, I would say above and below the footing, or the unit weight of the soil above and below the water table is 19.7 kilo Newton per cubic meter, and here as well. Okay, 19.7 kilonewton per cubic meter. What else we need to know to solve it? Okay, what we need to find out? We need to find out first. We need to find out the safe bearing pressure. We need to find out the Q safe, and we need to find out the P safe, the load. We need to find out the ultimate, the safe bearing capacity and the safe load. Now we need to use the Terzaghi equation, but use Meyerhof bearing capacity equations. Okay, use Terzaghi equation, but for the bearing capacity factors, equation for the bearing capacity, I would say factors. Okay, is it clear? क्वेश्चन की समझ आई है आप लोगों को? सर ये सेकंड पार्ट बताइए कि मेयरहोफ बेयरिंग इसको किस तरह मतलब यूज करेंगे.
अच्छा, ये इस तरह है ना कि आपने तिरजागी की जो इक्वेशन इस्तेमाल करनी है और मेरहोफ के बेयरिंग कैपेसिटी के जो फैक्टर्स हैं ना वो इस्तेमाल करने हैं, वो जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। एन सी एन क्यू एन गैमा आपने जो है ना वो कहाँ से फाइंड करने हैं? ओके सर, समझ गई। ओके गुड। एस सी एस क्यू तो वैसे भी 1 होगा हमारे पास क्योंकि स्ट्रिप फुटिंग है। सॉल्व करें और मुझे आपने आंसर देना है। क्यू सेफ और पी सेफ आपने मुझे देना है, ठीक है। and I'm giving you 5 minutes maximum. कोई मसला तो नहीं आ रहा? एनी प्रॉब्लम? सर यस प्लीज। सर जब हम तरजावी वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वो मेरे होप वाला सर उसकी फैक्टर्स वो फाइंड कर दे सर, इसकी समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि तिरजागी की इक्वेशन इस्तेमाल करें और मेयर होफ बेयरिंग कैपेसिटी के फैक्टर्स इस्तेमाल करें। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। देखें तिरजागी की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है?
हमारे पास तजागी की जो इक्वेशन है for finding the ultimate bearing capacity, that would be CNC plus gamma prime D and Q plus half gamma prime B and gamma. Now you need to use the Merhoff. Okay, let me write. This is the Tirzagi's bearing capacity equation. Now Merhoff's bearing capacity factors. And if you remember, in chapter number 2, I told you many times that please kindly note down those equations where you can find out the NC, NQ, and N gamma. Okay, please kindly refer to that chapter number 2 for the bearing capacity factors equations. But if you use those equations, the value of NC would come up 30 and NQ will come up 18.4 and N gamma will come up 15.6. उस्मान समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर। क्लियर है? वकार समझ आई है? यस सर। मशाल, आमना, इब्रार, यस सर। क्लियर है ना? आपने इक्वेशन, पहले हम इक्वेशन Clear है, अगर clear। आपको मेयरहोफ की इस्तेमाल करना चाह रहे थे, अब यहाँ पे और बियरिंग कैपेसिटर फैक्टर्स भी जो है मेयरहोफ के निकालते थे। अभी आपको उन्होंने एक चॉइस दे दी है कि आपने तिरजागी की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है जिसमें इंक्लिनेशन फैक्टर, डेप्थ फैक्टर्स आपको निकालने नहीं पड़ते, उनको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि तिरजागी की इक्वेशन इस्तेमाल करें जो सिंपल इक्वेशन है, और मेयरहोफ की बियरिंग कैपेसिटी जो एनसी, एनक्यू एंड गामा जो है ना, वो आप उन इक्वेशन से फाइंड करें जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी में गिवन थे। ठीक है, अच्छा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इनको 30 को एनसी, एनक्यू और एन गामा को नोट डाउन कर लें, और आपने मुझे यू नीड टू गिव मी द वैल्यू फॉर, okay, shape factors as CS gamma is equal to 1 for strip footing, that's fine. What will be the value of Q ultimate? Q 363 363 kilopascal. Okay, and Q safe 121 सर इसकी अल्टीमेट मेरे पास 379 आ रहा है। It's okay, it's okay. 379, 363, reasonable. Okay, but I would go for this value. Now you do the calculation, you can say that it's b into 1, and that one is chosen because the length of the footing is very much greater than the width of the foundation, because we are having a strip footing here, and this will give us 145 kilopascal. In fact, it's not the kilopascal, because we are using L equal to 1, so it would be kilonewton per meter, because it's strip footing. We are taking length as unity. Now we got the value of Q safe from this problem, okay, and we are going to use this value in the next problem, which is related to the alternative method for considering the effect of eccentricity, that how we can find out, or how we can relate with the minimum pressure and the maximum pressure. Okay, in order to do that, we will go to the slides here.
Now, continued from the previous example, now we calculated Q safe, which is equal to 121 kilopascal. Now, geotechnical engineer was provided with only these details. Okay, these details, and he used those equations, those factors, and he came up with the ultimate bearing capacity, or the safe bearing capacity, of 121 kilopascal. Okay. Now, structural engineer is calculating the vertical load, which is 100 kilonewton per meter, and he's saying that there is an eccentric load which is applied in the direction of the width of the foundation, which is equal to the EB 0.15 meter. Now we need to determine the largest pressure and we need to determine the least pressure. This is the first job. Okay, we need to find out the Q prime and Q double prime, and then we need to compare it with the Q prime. Okay, we need to compare the Q prime and I would say Q safe. Because if Q prime is greater than Q safe, it means it's not acceptable. And if Q safe is greater than Q prime, and Q prime is the largest pressure which is going to be exerted onto that soil, therefore we need to do the calculation. It's very simple, and if you remember, Q is given, E is given, and B is given. Now that B we took from the previous example. Okay, and we came up with the Q prime equal to 145.8 kilonewton per square meter and Q double prime equal to 20.8 kilonewton per square meter. Now we don't worry about 20.8 kilonewton per square meter, which is way less than the Q double prime. But if you compare right now with the Q prime, that 145 is greater than the Q safe, which is 121, I would say, kilopascal. Okay, so this is not acceptable because the larger pressure, the largest bearing pressure, is greater than the safe bearing capacity of this soil. Now, सर ये लिमिट किस बेस पर है? ये बेस अलाउबल स्ट्रेस बेस पे है ना. देखें, ये हमारे पास अलाउबल जो स्ट्रेस है ना, ये हमारे पास अलाउबल स्ट्रेस मेथड है या स्ट्रेस डिजाइन है. ठीक है ना, हमारे पास दो डिजाइन फिलोसफीज थी, अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन, और आखिर में जो है ना हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है ना लोड रेजिस्टेंस और फैक्टर डिजाइन पे आएगा. तो ये जो सारा चैप्टर 2 है मेनली फोकस करता है अलाउबल स्ट्रेस डिजाइन पे, और हमारे पास जो सेफ लोड है वो कम आ रहा है जो लार्जेस्ट प्रेशर उस सॉइल पे लगेगा. तो एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. इसके लिए हमने या तो सॉइल को इंप्रूव करना है या इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करना है. ठीक है, यहाँ पे सॉइल इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स करनी है, डेंसिफिकेशन करनी है, या जो है ना इसमें कुछ तरीके के साथ जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो टेक्सटाइल्स इस्तेमाल करने हैं, जो भी हमने इसके साथ करना है. ठीक है, सीमेंटेशन करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, ग्रेनुलर मटेरियल प्रोवाइड करना है, वो जो सारे सॉइल के कंपैक्शन मेथड जो कि हमने जियोटेक 2 जियोटेक 1 में पढ़े थे. ठीक है, जिस पे आपने प्रेजेंटेशंस भी की थी. एक तो ऑप्शन वो है, दूसरा ऑप्शन ये है कि लोड को कम किया जाए. ठीक है, अब हमारे पास
सॉरी क्यू प्राइम और क्यू डबल प्राइम सर, +6 और अच्छा, -6। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वैसे हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया था, क्यों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास देखें ये एक फाउंडेशन होता है, फिर जब ये फाउंडेशन में हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक फाउंडेशन है, ये हमारे पास एक सेंटर लाइन है, और इस सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऑफ, ठीक है, हमारे पास एक लोड एक्ट कर रहा है, और उसमें जो है ना हमारे पास ई बी है, एक्सेंट्रिसिटी उसकी कुछ है, ठीक है, जो भी है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास जो लोड इस डायरेक्शन में है वो ज्यादा होगा जो कंपेयर टू लोड इन ऑन दिस साइड। तो ये हमारे पास Q प्राइम है और ये हमारे पास Q डबल प्राइम है, विच मींस क्योंकि ये लोडिंग इस साइड पे ये डिस्टेंस कम है, ठीक है, ये x है और ये हमारे पास लेट्स सपोज y है, तो x इज लेस देन y। दिस इज आई वुड से द लोवेस्ट bearing pressure, और ये हमारे पास लार्जेस्ट द हाईएस्ट bearing प्रेशर। आइए समझ, ये थोड़ा बहुत हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। तो ये वही इक्वेशन सिंपली उन्होंने इस्तेमाल किया है, Q प्लस बी प्लस 6E डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द बी। उन इक्वेशन से Q प्राइम और Q डबल प्राइम से जो है ना उन्होंने स्ट्रेसेस निकाली हैं, और वो जो स्ट्रेसेस निकाल के फिर उन्होंने कंपेयर किया है जो हमारे पास अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की जो वैल्यू है, जो कि हमने फाइंड किया है प्रीवियस प्रॉब्लम में यूजिंग तेरजाकीज बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन एंड मेयरहोफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स। तो उसके साथ हम जब कंपेयर करते हैं तो वो लेस आती है, एंड दैट्स व्हाई इट्स saying here that Q prime is not acceptable. Now the structural engineers needs to reduce this value by some way, by decreasing the story of the building, by decreasing the dead load or the live load calculations, and by all these means he needs to deal with the Q prime. Otherwise, if the client is happy with soil improvement techniques, I'm pretty much okay with that. If I'm not restricted by the money or the cost of the project, so I can improve the bearing capacity of the soil so that I can increase the QSAF greater than, I guess, 145 kilopascal. या तो हम इस पे फोकस कर सकते हैं या तो हम Q बार पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। Q बार पे तभी हमारे पास फोकस करेंगे कि अगर हम उस पर लोड कम करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी उसकी कम करते हैं, तो अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसके साथ ओके है तो हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास प्रॉब्लम ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड एनालिसिस का आता है। वो बहुत सिंपल है। ड्रेन्ड एंड अनड्रेन्ड एनालिसिस का प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ड्रेन्ड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स भी गिवन है और ड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स भी गिवन है, ठीक है। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन सेम है, 1.2 मीटर वाइड फुटिंग है, 0.6 मीटर जो है ना हमारे पास बिलो ग्राउंड सरफेस या एम्बेडमेंट है, जो कि DF है। ये हमारे पास विड्थ है, ये हमारे पास अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। These are drained strength parameters. Now, again, you need to use the Terzaghi's bearing capacity equation and you need to use the Meyerhof bearing capacity factors. The solution is given here. Please kindly go through the solution. It's pretty much self-explanatory. You need to find out the H and the effect of water table, and then you need to use the gamma prime in the third term. You will use the Terzaghi's bearing capacity equation, the bearing capacity factors using Meyerhof bearing capacity factors equations, and shape factors, Q ultimate. This is in the case of the drained analysis.
Please kindly note down, this is the, in case of drained analysis, you will find out 240 kilopascal. Now, in case of undrained analysis, what we are going to do, we are going to use those those equations, Terzaghi's equations for finding the Q ultimate. So this is the Terzaghi equations to find out the ultimate bearing capacity. Q is used as 19.7 because in undrained analysis, we don't need to consider the water table or the pore water pressure. So we need to subtract, if you want to find out the gamma, we need to use the gamma prime here. In case of the drained analysis, our long-term stability analysis or the effective stress analysis. So that is also known as the effective stress analysis, long-term analysis. And for undrained analysis, that is known as short-term analysis. Okay, so we will use the gamma equal to 19.7 kilonewton per cubic meter in both second and third term, and you will use the Terzaghi's bearing capacity equation. And as we know that phi is equal to 0, undrained analysis, so NC is equal to 5.14, NQ is equal to 1, and gamma is equal to 0. And then you will come up with the value of 1041 kilopascal. Now, which one is the governing condition? Now, if as a geotechnical engineer, you need to pick the value for the design, or if you want to give the bearing capacity, the ultimate bearing capacity of the soil. So which value you are going to give and share with the structural engineer? Which is obtained from drain analysis. Which is obtained from drain analysis. Reason, please, your justification. Sir, it is less value and we have to design for this one. Any other thoughts? सर ये तो soil पे depend करता है सर. Any other thoughts? ये तो soil पे depend करता है. You need to elaborate that explanation, please. Usman, nice question, but you need to elaborate a little bit, please. सर फॉर एग्जांपल अगर सिल्टी हो तो हम फिर इसके लिए अनड्रेन टेस्ट करते हैं, अगर सैंड हो तो इसके लिए हम फिर ड्रेन टेस्ट करते हैं. तो ये इस तरह से इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे we are given with the, I guess it was taken from previous strip 14% heavily over consolidated clay. Okay, it's given here. We are unable to read, so let me clear this out. So that okay, now we are specifically talking about this problem, over consolidated clay. Now, in case of over consolidated clay, as Ibrahim said, that we will pick the lowest value because we concerned about the drained analysis. If you remember from the theory discussion, we talked about the stabilizing the pore water pressure information, the negative pore water pressure, and the increasing the shear strength of the soil in case of over consolidated clays. So therefore, we need to, the lowest strength can be obtained in over consolidated clay when we wait for stabilizing those negative pore water pressures, and we will get the lowest shear strength of the soil. And now, therefore, the governing condition or the governing strength would be the drained shear strength of the soil in case of the over consolidated clay and in this particular problem. Now, that was all about the allowable stress design philosophy and the methodology which we discussed in our previous examples. Now, there is another design philosophy, and that is known as LRFD, which is known as load resistance and factored design. Now, load resistance and factor designs, I will give you a brief overview of that. We are given with the load factors. So for example,
1 for the dead load and 1.3 for the live load. Basically, we are increasing the live load. Whatever load is calculated by a structural engineer, he will multiply it, or he will increase 30% of that load for the design of the footing. Now, strength reduction factors, you can clearly see those. You will go to the soil mechanics lab and you will give him a friction angle, and he will simply multiply that friction angle with a reduction factor. So he will further reduce your friction angle value. So he's in fact increasing the the stability, because he's decreasing the friction angle and he's increasing the loads by 30%. So therefore he's increasing the factor of safety, or he's increasing the bearing resistances there. Now, how he's going to calculate that? So as we already know that dead load is increased by the factor 1. So the foundation is given 3 into 3 meter. The permanent load is the dead load here, and that is 400 kilonewton. The variable load, which is the live load, it's 1500 kilonewton. The depth of 1.5 meter in sand is given. Water table is at the surface. The saturated unit weight, here is the saturated unit weight. And the shear strength parameters C and phi prime are given. Phi prime is 39 degrees. Now, is the bearing resistance limit state satisfied? So it's the bearing resistance limit state satisfied in accordance with the limit state method. Now, based upon the limit state method, this is the bearing resistance limit. Okay. Now, in order to find out this bearing resistance limit state, we will find out the designed load, and the design load can easily be obtained by multiplying 4000 with the factor 1 and 1500, which is the live load, multiplied by this 1.3. So 5950 kilonewton would be the design load. In the design bearing resistance, if you notice here, we are given with the Terzaghi's equation, so you can find out the Q ultimate, and you can multiply that with the area of the foundation, so you will get the bearing resistance, or the design bearing resistance, RD, and this we can call that VD. Okay, the design load, and this is the RD. Now, we are using the concept of the reliable stress design here. So the water table is at the surface, so you will use the gamma prime, and the unit weight is used 10.2 meter to 2 kilonewton per square meter. And you can see here the strength is reduced by 20%. So you need to multiply with 0.8 and you will come up with a new value of the friction angle, and that value you can put in the friction angle here, and based upon that friction angle, now you are going to find out the bearing capacity factors. Okay, and once you find out the AF, and the AF is given, and the Q ultimate from Terzaghi's bearing capacity equation, so you will come up with the RD value, and the RD value is 677 kilonewton. Now that is RD, and this RD is greater than, in fact, this is the this is RD, and that is greater than the design load. So the bearing limit state is satisfied. That's okay. So you can proceed with the soil conditions, the loading conditions, and the reduction factors. So you can clearly see that the bearing resistance limit state is satisfied. That's all from the chapter number 2 on the shallow foundations relating to the bearing capacity of the soil. So thank you very, very much for your active participation. Now we will move towards our next session, which is question and answer.
Thank you so much.